and all other tests given to you so far. Got it? Right? And LR का कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना. सेक्शनल कल स्पेशल क्लास लगा है LR का. हिमानी यस सर. हाँ, थोड़ा टाइमिंग का डाल दिया करो क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा टाइमिंग का. ठीक है सर. है ना? ओके. लेट ज्वाइन करे उसको अलाउ कर देना आज, बिकॉज नोइंग अबाउट. Is it visible? 6 questions visible to you? 6 question visible है भाई आपको? Yes sir. Yes sir. 6 question 5 minutes. Those who have joined late, there are 6 questions, 5 minutes. फटाफट करने का है. सर क्वेश्चन 3 ऐसा है ही या फिर कुछ मिसिंग है? क्वेश्चन 3 मिसिंग है. क्वेश्चन 3 टाइपिंग एरर है. क्वेश्चन 3 भूल जाइए. हिमानी ग्रुप में एक बार रिमाइंडर डाल दो, है ना? और मे बी ऐप पे नोटिफिकेशन डाल दो. और ये क्लास उस पे रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है लाइव? वो मेरा ना थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर. चलो, वेयर इज अमन? सर आई कनेक्ट कर. चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्लास वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे हम कर रहे हैं. थैंक यू सर. सर इज लेस देन Sir?
एक्सक्यूज मी सर, जी सर यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, डेट अनु हैज कवर्ड 20 मीटर मोर या लेस में होगा सर? 20 मीटर मोर या लेस देन मनु? हम्म, क्या मोर कर लें? कवर्ड लेस, लेस ही आना चाहिए। लेस लेस मिसिंग है यहाँ पे, टाइपिंग मिसिंग है, लेस देन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सस्पेंस। हाँ भाई, सो कैन वी डू ध्रुव, मनीष अपना वीडियो ऑन कर लो। आशीष, इशिता, सौरभ, जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, सो अगर गैस लगाना होगा तो व्हाट शुड बी द आंसर? So it should be a multiple of 13. It should be a multiple of 13. Very easy. So 91 और 78 में से आएगा, right? Yes, no? Yes, sir. So it can be written as, this can be written as 13 raised to power 3 minus 9 raised to power 3 plus 4 raised to power 3, right? बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. So यहाँ से if you take 13 raised to 13 common, right, this will be divisible by 13, we know. Yes, no? बोलो yes, no? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. this will be divisible by 13. So these two are not the answer. Huh? Divisible by which of the following? So it has to be divisible by multiple of 13 also, but which number will be here, that we don't know. Huh? For that we have to, because the number is not very high, you can simply, take, because this will be a multiple of 4 also. Isn't it? 13 Yes, sir. minus 19 cube. A cube minus B cube is divisible by A minus B. बोलो यार. Yes, sir. It will also be divisible by 9 also. So 4, 9, 13. So 76 is the answer. Did you understand that? Yes. Yes, sir. 78 is the answer. Good question. In fact, good question. It's a mix of the question from number system and your last
unit digit thing. Anil asked Atul to remove 2 liters from 7 liter alcohol and water, then adds 2 liter of water to it. Okay. It's a 2 liter of replacement, right? But Atul first added 2 liters of water and then removed 2 liters of solution, right? Then find the expected concentration of the ratio of the expected concentration of the alcohol. So we have 2 liters of solution of alcohol and water. 2 liter of the solution. Find the ratio. So removing 2 liter of solution will not change the Ratios. alcohol, huh? सर क्यों सर बाद में जब रिमूव करेगा उसमें वो भी तो जाएंगे दोनों चीजों? दोनों ही लेकिन जाएंगे, सर तो वाटर ज्यादा रहेगा उसमें। concentration तो नहीं प्रॉब्लम आएगा ना उसका। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, वो ठीक है। Atul first remove 2 liter of the 7 liter alcohol and water. So you don't know what is the initial value of this solution. Yes, sir. Then add 2 liters of water to it. But Atul first added 2 liters of water and then removed 2 liters of solution. सर इसका मतलब ये नहीं पहले उसमें 7 में 2 लीटर पानी था जो स्टार्टिंग में? नहीं पता नहीं है ना पहले। सर इसमें जो रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर और अल्कोहल का ना, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। रेशियो ऑफ द एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर वाटर और अल्कोहल का होगा तो ऑप्शन 2 आएगा क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें वाटर ज्यादा है। नहीं हमें वी डोंट नो इनिशियली व्हाट वाज द तो ये कैसे पता लगा वाटर ज्यादा होगा एंड पे? liters of वो भी है। solution of alcohol, solutions of alcohol. अगर हम इसको प्योर 7 लीटर लेके करें, प्योर 7 लीटर अल्कोहल ले लो, ठीक है, उसमें से 2 लीटर टेकन आउट, सो इट इज 5 लीटर एंड देन add water to it 2 liter, 5 right? So 5/7 आ गया फर्स्ट वन का, और सेकंड वन में 7 में 2 ऐड किया आपने, राइट? So 7/9 आ गया, right? So this becomes 45 ratio 49, right? Expected alcohol in 2 solutions, right? So let us assume, initially there was x percentage alcohol, right? Got it? Yes. Let it be x percentage. So in this case, it will become 5/7x, right? In the first case, isn't it? यस yes sir. Second case, it will become 9/7, 7/9x. Right? Yes sir. Because he added 2 liter water, no, in 7. Are you getting it? यस Initially it was 7, you removed 2, it is left 5, you add water. Here you add water 2, so total becomes 9. Here becomes 7, so 5/7 and 7/9. So you calculate it 45 by this. ठीक है? सर इसमें दो कैसे बता दिया कि अगर ये होता तो ये हाँ, ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता। चल किसमें कितनी है वो रेशियो देख हाँ, next compounded interest of 27th and 28th year is this thing. So this is rate of interest is 1/12. हाँ जी सर 1/12 is how much? 8.33. 3 Easy question. यहाँ पे ये less आना चाहिए था. So it should be 80 and 100. 180 होगा 180. 2/3 of 87 is less than 1/5 of 2/3 of 87 is 58. और उसका Is less 70. than the 1/5 7 70. 12. सर एक डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में। हाँ 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 बोलो। सर आपने बोला था 4 पे डिविजिबल, तो 78 तो प्रॉपर तो डिविजिबल ही नहीं 4 पे। अरे 2 4 पे डिविजिबल है, 9 पे डिविजिबल है, 13 पे डिविजिबल है, ठीक है? ठीक तो है 4 में से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 13 ले लिया, हो गया ना 78। अच्छा ठीक है सर। ओके नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस 5 मिनट। सर एक बार फिफ्थ वाला बता दोगे आप फिर से? फिफ्थ में तो कुछ नहीं है ना, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, राइट?
सो उनका रेशियो 4:5 है, राइट? इसका 20 डिफरेंस है, तो ये 80 करेगा, ये 100 करेगा, एंड द सम ऑफ दीज टू विल बी ओके सर, थैंक यू सर। question number 8, 10 and 12. 8, 10, 11, 12. Two questions are missing, so you should do 8, 10, 12. हाँ जी बेटा, डन विद द क्वेश्चन.
First question. 8th, 10th and 11th, 12th, right? So what will be unit digit here? Hello. Sir, 2. 2. Why? Because 4 raised to power even 4 you. always gives you 6, 6. isn't it? Yes, sir. Yes, sir. And 3 raised to power third, because if you divide 7 by as well. 4, it will become 3 raised to power 3, 7. Into 1 will always remain 1. Right? 6 into 7, 42. 2 is the answer. Got it? Yes, sir. So this test your, 3 questions in fact, it's thrice you have to use it, right? How your cyclicity of number system works. Those who have not still done number system, I will strongly recommend watch video number 1, 2, 3, 4 of number system. It covers all the concepts of number system, basic concepts of number system. Now this question looks like a Fibonacci series. No, it is a simple AP. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So from here to here it goes 392 divided by 4. How much? 98. But the number of terms will be 99. Yes, sir. Yeah. Basic numeration. You should not get it wrong. So this becomes equal to 1 option by A. 3. Yeah, it will be log 6 raised to power 3. This will come out. It will be 1 by 3. So ratio of the area of the triangle ABC. ABC is a whole triangle, and ADC is this much triangle. Right? BD is equal to 2. This is equal to 3. So it's very simple. 3 upon 5. Right? Means 5 ratio 3. Body mass Yes, sir. theorem. Because the base is same. Base is on the same line, and you have a different. You have same altitude. Same height. Same altitude. So ABC triangle has 5 base and this has 3 base. That's it. Right? Whatever is the altitude, we are not given altitude. So you don't say that this is not given to you as a altitude. Huh? Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. So can we move ahead now? Yes, sir. Yeah. So good. So anybody having any doubt in first 10 questions, let me know before we go to the second set of questions. सर वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था वो एक बार बता देंगे क्या? बता देता हूँ बेटा. Compound interest means you have an interest on any year. The previous year, penultimate years, this becomes your base, and the next year becomes the total interest. So let us say I'm talking about any year. Let us say it is the 30th year, right? And it is 31st year. So whatever will be the difference between 30 and 31st year, it will be because of the interest that you apply on this year, isn't it? Yes, sir. So he given to us that he has given to us that 12th and 13th year. This is the ratio 12th and 13th. So if interest is 12, here interest is 13. This one extra interest is coming. Why? Because interest on the base, right? Base is 12, so 1 by 12 answer. ठीक है सर. Right? This is a standard question, right? If it gives 2 years, then you have to apply for the funda of 2 years. Like this is given 30th and 32nd, then you have to use 2 years formula. Yes. Right? Yeah. So sorry guys, this is I think your typing error hai again. I think 13th question. Find the range for x square for following. सर मुझे 12 तक की शो हो रही है. सर स्लाइड नहीं दिख रही. मैं कर रहा हूँ. Can you see it now? Yes, sir. Yeah, this one. This one, I know.
Hi guys, there are 2 questions only this here, no? Others you will not be able to do it because of typing. Somehow this PDF has not picked up all the values written in the algebraic format. So you can do question number 14 and 18. सर M and N क्या है 14th में? It should be actually A and B. Okay sir. Okay. The question number 14th, when it is divisible by 8 and 11. This is a standard question from number system where you want to check it whether it is divisible by 8 and 11. You know, if it is to be divisible by 8, last 3 digits should be divisible by 8. 8. So what it can be? You know, 380, So 360, 384, right? It can be 4 only, isn't Yes it? sir. So these Yes, two sir. options goes out. So either it is 5, 4. Now when it is to be divisible by 11, you know alternate number. You know the alternate numbers, right? Yes, sir. Yeah. So here you see A plus 9 plus 2, 9 and 2, 11. I can remove 11 straight away, right? And then again I have 4 and 8. Here I have 8 and 3. Again I can remove 11, isn't it? Yes, no? 11 can be removed, guys. So here we have 8 and 4, 12. So it gives you 1. So A plus 1 and B plus 3. B was how much? 4. 4. So it becomes 7. So A plus 1 should 4. be like that. So A comes out to be 6. Yes, no? Yes, sir. A comes out to be 6. Okay. I hope everyone got it. Right? Now, if it is to be divisible by 9, the sum of the digits should be divisible by 9. 9. So 8, 9 and 11, these are very important. 2, 3 and 5, they are important, but they are very easy. Everyone can do it because you can do it manually also, right? But 8, 9 and 11 divisibility rule is very important. Okay. 150% of a number is 75. What is 75% of y? Right? Easy one. Yes sir. Yeah. सर 37.5 आएगा ना? So he says 150% of a number is 75. What is 75% of y? What that will be? 37.5. 0.5. Answer would be none of these. परसेंट नहीं होना चाहिए ना सर? परसेंट नहीं होना चाहिए उसके साथ में. ठीक हो गया? अच्छा, yes, टाइपिंग sir, एरर ठीक लगा है. सर वो. मुझे लगा टाइपिंग एरर. नहीं, 150 के साथ में नहीं है ना. एंड नन ऑफ दीज दिया हुआ है. ठीक है So सर. we cannot take risk. अगर none of these नहीं दिया होता तो we would have assumed it to be an typing error. चलो. So जो क्वेश्चन इसमें से हो पा रहे हैं 19 to 25.
सर 19th 19 सर विजिबल नहीं है। Yeah, what is the problem in 19th? सर विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं, ओके एक मिनट, उसको जूम आउट कर लो थोड़ा सा। आप सर सही है ठीक है। हाँ, हाँ जी बेटा, डन। यस सर।
So Anil covered Anil covered half of the journey. एक मिनट स्क्रीन आ रही है, चेंज हो गई? क्या आ रहा है स्क्रीन पे भी? सर नहीं आ रही। नहीं आ रही है? आ नहीं रही है, शेयरिंग दिखा रहा है सर। Now, यस सर, आगे। okay, good one, good enough. तो this says to us, क्या बोल रही है अपने को? ये हमें बता रहा है अनिल covered half of his journey at 12 and rest at x, then average speed is 16. So we will just put the formula for average, right? Bolo yes, no? यस सर। 12 into, because the distance is same, no? Yes, sir. यस सर। So 2xy into x plus y is equal to 16. This is how we do it. Huh? सर मिक्सचर एलिगेशन ड्रॉप करो। नहीं, मिक्सचर एलिगेशन से नहीं होता है ये, सर हो गया। नहीं होता, गलत आएगा फिर उससे। ठीक। जब डिस्टेंस सेम होता है, so you cannot say a plus b divided by 2, it will be this thing. उससे तो आपको 20 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना है सर आपका? आपका 20 आ गया ना? नहीं सर, हाँ जी सर। 20 गलत है ना फिर ये। So let's do this. This becomes 8 and this becomes 12. X is equal to 96 plus 8x. X is equal to 24 आंसर आएगा। ठीक है, वैसे भी ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, नहीं? Yes, sir. If this is 12, this is x and overall is 16, it should be something more than that, isn't it? Yes, sir. बोलो। Yes, यस sir. सर। हाँ, if नहीं, ये छोड़ दो। The average of 7 number is 15. If 7 number is divided by 3, then 3 is added to each of the resultant numbers. So it will become 8. 8. Because whatever will happen to the each of the number, if you happens to average also, right? जो भी आप सबको करते हैं, हाँ जी, so whatever operation you apply to one individual number, the same will be applied to average. Okay, the ratio of the volume of two cubes is the ratio of the surface area. First you find the ratio of the sides, will be 5:5. Yes, Yes, sir. the ratio of the area will be this surface area or whatever area it is, this thing, right? In an equilateral triangle of side 4x, calculate the length of its altitude. So altitude is equal to √3/2a, isn't it? Yes, sir. So it will be, I think, first option. A man can row 10 downstream. This the speed of man in the still water, 12. Yes. Yes, sir. Gitu saves 20% by 20% discount on a pen. What is the amount money paid by him? So 20 rupees discount. So this is corresponds to 20 rupees. यस सर। So this becomes 160. 160।
but this is not the actual amount. This is the total amount. MRP. Answer should be 140 because Yes. 20 Yes, rupees is sir. amount also, no? बोलो भाई, yes. सर 23 Yes. वाला बताना, 23rd कैसी है? 23rd कैसे किया? अरे सिंपल फॉर्मूला है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 इनटू साइड. ठीक है. सर सर ये जो 21 सर 21 बता दीजिए सर. 21, whatever you do it to average each of the number, that will happen same to the average. Like your average of 3, 4, 5 is equal to 4, right? So if you double each one of them, then the average will also be doubled. ठीक है सर, ठीक है. Any operation you apply to individual number will be applied to the सर उसमें Average. डिवीजन और एडिशन के अलावा अगर स्क्वायर होता तो square से नहीं होता है. स्क्वायर से नहीं होगा ना? स्क्वायर से नहीं होता. अरिथमेटिक ऑपरेशन. स्क्वायर अंडर रूट होगा नहीं होगा. ठीक हो गया? हाँ सर. सर हाँ बोलो. सर जैसे 15 और 7 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया एंड देन फिर 7 से डिवाइड किया, तो गलत क्यों आया? नहीं 15 नंबर है ना, एवरेज 15 है उनकी, राइट? देन ईच ऑफ द नंबर इज एडेड बाय 3 इज एडेड टू ईच, नॉट इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 21 ऐड होना चाहिए आपका एक्चुअली. ये सर 21 ऐड किया. हाँ फिर आएगा, सही आंसर आएगा. क्या प्रॉब्लम है? 21 आएगा, क्या प्रॉब्लम है? 7 into 15 is equal to 105. यस सर. Divided प्लस by 3 is equal to 45 plus 21 64. नहीं 35 35 आएगा. 54 divide by your 7. 7. 56 आएगा. 56 divided by 7 8 आ गया. क्या प्रॉब्लम है? यस सर. या चलो. So let's go ahead now. (26 to 30) कर लो पहले. डाटा सफिशिएंसी.
हाँ जी. X, Y, Z are integers. X minus Y, Z greater than this. So what we can do is we can cut X with X, and Yes, sir. Z can be greater than Y. Right? So क्या ये है? Is it necessarily asking is Z greater than Y? So if we know both the things, then we can say that Z is greater than Y, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Because Z is positive and Y is negative. Negative. Z is essentially greater than Y. It means if we use both the statements, we can answer this question. Got Yes, it? sir. Yeah. How old is Abhishek in 2006? Abhishek is 5 years younger than Atul, whose age is a prime number in 2005. Atul's age is a prime number in 2007. But again, Cannot be determined, sir. cannot be determined. So 11 or 13, 5 or 7, two So options. because there are so many numbers which are prime, right? Which Yes, are sir. prime, which are these are called I think prime pairs or what? No, like 29 and 31, no? Mm-hmm. Yes, sir. What do we call as prime pairs or कुछ तो बोलते हैं इनको consecutive primes बोलते हैं इसको. हाँ, तो इसको consecutive prime बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे because the difference is of 2 years, right? So Atul's age is a consecutive prime in these years, but they are not only the two cases. There are thousands of numbers where it can be a consecutive prime, like 101 and 103 is also consecutive prime, isn't it? 5 and 7. Yes, sir. 5 and 7 is there, right? नहीं 5 and 7 का होगा तो ये 0 का हो गया ना भाई. हाँ, लेकिन फिर भी 11 निकाल and सकते हैं सर 13. वो. And this is 2006 में what एक is ईयर the- का होगा ना. What is the value of x? So to calculate the value of x, you need two equations, right? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But we A में have आ to रहा है. see whether we have to see whether these are different than each other or not. Many times it may happen he may give you the same equation. So this gives you x plus y is equal to 8, and it gives you 5x 5x plus y. y is equal to 30. 13. Yes, this will give you the answer. Answer. Right? And from here we can see 2x minus y is equal to 11. This will independently not give the answer. Got it? Yes, sir. Yes. So only one is the answer. The train crosses this man in 10 seconds and platform in this thing. So we cannot find the answer The length. because we are not given the Speed. length of the platform. Okay, sir. Length of platform नहीं दिया. अगर length of platform दिया तो भी हम निकाल लेते. Right? Ah, yes, sir. Yes, sir. We are given nothing, so we cannot say anything. A and B and positive are positive integers. A plus B square is equal to this. What is value of B? So if you know, this is not adding any value. Yes, sir. Only A. Only A. Because if A is there, B can be, if A is 4, B can be 1 only. Right? Yes, sir. What is the numeral value of A plus B? Cannot be determined. Right? In this. Yes, sir. Yeah. So let's go ahead with the question number 32 to 35. Quick. 32, 35.
Sir, time over. Time over. Okay. So question number 32. X plus y is odd and is given that this is odd. We have to find whether x is even or not. See, if y is even, this is even, so this becomes odd, right? No, we can get the answer. X plus Yes, y sir. is not greater than 10, of no use. The first one will give me the answer. Yes, sir. What is the value of the positive integer n? N cube is less than 125. So n can be 1, 2, 3, 4, right? Yes, sir. And I think it should be n is less than n Equal. cube. N equal chalo n cube. So it will only be possible in this one, 1. right? So if we know that this is the case, in fact, I can find it with only this one, right? I don't need this one, Yes, sir. right? Because n cube is equal to n, and where n is a positive integer, this is only possible when n is equal to 1, right? Yes, sir. If you want to do equation wise, n cube minus n is equal to 0, n into n square minus 1 is equal to 0. So n is equal to plus minus 1, right? Yes, sir. Either n is equal to, so it is a positive integer, so n is equal to 1. What is the value Yes, of sir. x plus y? So here x minus y is equal to x square minus y square. How to prevent cybercrime? Okay. So here you will write what is the value of x and y. दो घंटे हैं ना. Mm, So इसको x minus y x plus y लिख के x minus y so x minus y काट देंगे. from here your y is equal to 0, right? X will go out, y will become 0, right? And सर फर्स्ट इक्वेशन में हम सर फर्स्ट इक्वेशन में हम कर सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो x माइनस वाई x प्लस वाई कर देंगे. सर तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी. x की ये तभी कर सकते हैं when this is not equal to 0, when x minus y not equal to 0, only then you can cut this. Are you getting? Okay, sir. If this is equal to 0, then you cannot cut it. तो दो वैल्यू आ रही है x की 0 and 1. आप समझ रहे हैं? यहाँ नीचे से y 0 आ गया, y 0 है तो माइनस y is equal to x is equal to x square. So x square minus x is equal to 0. So x minus 1, x can be 0 and 1 यार. So I don't think that you can really find the value of x plus y. Okay, sir. But here x cannot be 0. X has to be 1 only. So it should be 1. Both से आंसर आ जाएगा. मैं फोटो खींच के भेज दूंगा. Because this is not possible, no? When it is x is equal to 0, then both become equal. Then you cannot cut this. फोटो खींच के भेजूंगा कि फोन पे सेट करूंगा. अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो ये possible नहीं होगा ना? You cannot cut this, but this will be true. So I will go ahead with cannot be determined. Prevent cybercrime. Okay, guys? Yes. The total value present ages of this is 9 divided with B is present age. Average age of ABD 60 हो गया, so we cannot find the age. Average age of CD is 25 years. From both of these we can find the average. No, B we cannot find. B नहीं find कर सकते. From here we can find. हाँ जी. From here we can find C. From here we can find D, right? Yes, sir. But A and B we cannot find, right? So cannot be determined. Okay, 1 DI set. Five minutes DI set. Hello, sir.
अरे बेटा क्वेश्चन डन. क्वेश्चन नंबर 36. Yes, sir. या 36 बोलो क्या है भाई, क्या दिया हुआ है आपको? यू आर गिवन द रेवेन्यू ऑफ द पब्लिशिंग हाउस व्हाइल सेलिंग बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, राइट? Got it? Yes. So here you see, which year shows the highest change in revenue from novel? Novel is blue one, highest change. Highest change here. 2001 2001. 2001 लग रहा है. 2001 highest change. नहीं यहाँ बेस बड़ा हो गया ना यार, ये वैल्यू तो ग्राफ ही बड़ा बेकार दिया हुआ है ये. लगभग सेम सा हाँ जी, है. लगभग तो वही लग रही है ना सर. ये 45 है यहाँ पे, अगर हम माने इसको 45 मान लें इसको, और ये 42 हो गया, ये 44, हाँ यही होएगा, 2001 ही आएगा. Yes, sir. परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम न्यूज़पेपर ये वाला है, तो ये काफी ज्यादा लग रहा है नहीं? सर 2002 का पूछा है. 2002 का पूछा है टोटल रेवेन्यू में. तो ये 50 से कम है सर. ये आ जाएगा आंसर. कैसे Yes, आता है? क्योंकि ये देखो तीनों में 1/3 से ज्यादा होगा क्योंकि हाईएस्ट है. एक काम करोगे, मैं ना ये वापस कर दूंगा. ठीक है, कर देना मीडियम तक कोशिश है. ओके. हाँ जी सर. सारी और ये हाफ से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 40 है, ये 50 है, 90 है, ये 80 है, तो ये अगर 90 होता तो बनता ये 50. दिस इज growth of revenue from it's asking total revenue, right? Yes, sir. From 1999 to 2002. So here you see 45, 30, 75 and 70. 145. Here comes 40, 50, 90 and 85. एक्सेल शीट से वजन पाके कल मेल करनी है. 175. So growth is approximately 30, approximately 20%, 21%. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Number of years in which there was increase in revenue from at least 2 category is. So here increase, here increase, here increase. Yes. Here decrease, here increase, here increase. Yes. Decrease, increase, increase. Yes. 3 years. 3 years, sir. 1, 3, 3. It can be 2. 4, 6, 13 आपला हो. This one is out, right? 1, 3, 7 plus 6. 7 plus 6, 13. 13. Okay. So we are done with the 40 questions of this thing. ये लास्ट टू लास्ट ईयर स्नैप में ना ऑफिशियल मॉक निकाले थे, ठीक है, जो मैंने लास्ट मैराथन में कराया और इस मैराथन में कराया. दीज वर द ऑफिशियल मॉक्स पब्लिश्ड बाय SCHMRD, राइट? और नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर व्हाट विल बी द लेवल, राइट? यूजुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है स्नैप, राइट? बट यू शुड बी रेडी फॉर, हालांकि मैं स्ट्रेटजी सेशन आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस. यू शुड बी रेडी फॉर any surprises, right? They may give the surprise, right? They somebody will think that CAT has given a lot of surprise, so if we will not give surprise, it will be another surprise. So we should give a little bit of surprise to the student, no? So but the strategy should, you should be able to modify the strategy accordingly. Usually difficulty level is what we are doing, but in case the difficulty level is slightly higher, we need to slightly change the strategy, because negative is 1/4. We will go ahead and mark all the questions, right? But we will try not to spend too much time, because when it is easy, then it is easy to skip and do other question. But when you get tough question, so after skipping 3, 4 question, 5 question, आपको लगता है यार ऐसे तो मैं पूरा पेपर ही छोड़ दूंगा, right? So you try to re-strategize and then you start doing the question, और फिर उसमें time निकल जाता है. So चलिए, that's it. And हाँ बोलो बेटा.
सर जैसे कि मेरा पेपर जो है वो 6th को है, तो एक रिक्वेस्ट थी कि जो वीडियोस और जो टेस्ट ऐप पे हैं वो अगर आप लोग थोड़ा देर तक रहने देते। हाँ हाँ, वो 9th तक रहेंगे, दे ऑल विल बी अवेलेबल टिल 9th। ओके सर, ठीक है, और जो लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे अपना 20th को मॉक, 20th तक सारा काम कंप्लीट होगा, आई एम गोइंग टू गिव देम द बोनस मटेरियल आल्सो। गॉट इट? सर मैं वही बोल रहा था कि सर अभी लेक्चर्स देख रहा हूँ आपके पुराने वाले, हाँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर, थोड़े मॉक्स पेंडिंग है, तो थोड़ा सा मतलब 20 तक ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, कंप्लीट इट, फिनिश इट, मॉक्स कोई भी पेंडिंग नहीं रहना 50 चाहिए। हाँ सर आज काउंट किया तो 58। सर मॉक्स मतलब बस जो वो ये 7 मॉक टेस्ट हुए हैं स्नैप के, हाँ, वही वाला। अगर आपका स्कोर 30 प्लस आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग 30 प्लस स्कोर, आई वुड रिकमेंड यू टू अपीयर फॉर अदर मॉक्स आल्सो, 7-8 other mocks. Simani has shared the list of the mocks which are available for free, right? सर वो LR के बच गए मेरे। हाँ, वो भी दो ना भाई, स्कोर देखो, स्कोर कहाँ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी। अगर स्कोर 30 प्लस है फिर अलग कहानी है, स्कोर 30 से लेस है फिर अलग कहानी है। क्या स्कोर है केतन? सर स्टार्ट कम से हुआ था, फिर थोड़ा ठीक गया था, मतलब इंक्रीज हुआ 23 तक गया, उसके बाद फिर अभी और गिर गया, 17-18 पे आ रहा है। एलआर करो, एलआर का सारे मॉक लगाओ और स्पेशल क्लास लगाओ एलआर का जो लग रहा है, एक्स्ट्रा क्लास वीक बच्चों के लिए एलआर में जो वीक है ना। तो चलो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। 11 बजे टेस्ट भी है आपका। सर वो एलआर का कब है क्लास, मतलब वो शेड्यूल में डाला हुआ है ना, शाम आई थिंक सर मैराथन तो आज 3:15 बजे है, वो डाउट सेशन रात को होता है 9:30 बजे। हाँ चलो, ओके बाय अच्छा बाय बाय बाय।